Ladakh sena junugun tengsang yarkyas nastunte yuntan sat tonpe sang tonpogun lena zadinaino. Innang te loptuk tsangma lasna chatsang jik top wosin juna makas pajishkyotanok. Tena mikjigun nang nyampo stal yarkyas tang zotaps laspose taldik tang junugunena rango rang tonches tang janmagun lang lasna zacheses mikjijin nang nyampo. Marches nishurtun nistong nishur tsakshig jaga Sindhu Sanskrit Kendra Stonas Lena Lasda Jigital Dik Zatet Pen Kana Ladaks Ujung Nasde Shishpongjon Ba Sikur Jos Arki Mathur Skundon Stötsula Juxtot Pen Kaskapsla Kaspa Sose Junugunla Lasna Pinchese Tapslams Natsokshik Stanazaz. I welcome all the participants who are the focal point of today's skill development workshop, which aims to equip our youth of Leh district with desired skills and develop entrepreneurship skills. प्रधानमंत्री जी ने कहा है, to be relevant today, we need to skill, reskill and upskill. Mari UT Soma we nanga daksa job opportunities mamang po nok nejang te nanga scaps thopche zeno. Mat ins kyang changmala job ngata thopches po ngata kakspek chokshigeno. Tefia entrepreneurship na ngata samba tangches young ngata private companies nguni nanga daksa chiga sang chiga ngata yongche zeno. Thore yongche chane tus nguni nanga gyala se gyala industry yongche zeno. Now that just shows कि अगर लद्दाख की सोसाइटी को अगर लद्दाख की इकोनॉमी को डेवलप करना है then we have to segregate the entire society, the youth into different groups. किसको क्या ज़रूरत है उस नीड को मुझे फुलफिल करना है. ये जो वर्कशॉप है इसका ऑब्जेक्टिव एक मेजर ये है कि आपसे भी हमें मदद चाहिए. आपको क्या चाहिए, कौन सी स्किल एक्वायर करना चाहते हैं, कहाँ काम करना चाहते हैं, किस तरह का काम करना चाहते हैं, और उस काम में हम स्किल आपको दें, सर्टिफिकेशन दें जो कि पूरे इंडिया में पूरे वर्ल्ड में एक्सेप्टेबल हो. स्किलिंग इज़ फर्स्ट. उसने अपने आप को स्किल किया तो उस टेक्नोलॉजी को समझ के उसने एक छोटा सा कुकर घर पे ही असेंबल किया और उसके फादर को एक सोलर कुकर दिया. अब उसके फादर आज भी एक सोलर ठेला नाम से एक स्टॉल लगाते हैं. और kon that ki maskit porak ngaja daksa chukpa light mani mete izuk choste dukste nok ta ngaja man chanlangi ma sharkan chok chora rak juduk ba kon man that du gyale kazugi ngaja sare choste yul mong poti su stop ka na light mani metkan darun chupek tene de yul guni na ngaja ran sote chalte ngaja ra light tan seno gale film types na men nis yot kya gyale friction film का वो रियल स्टोरी का बेस्ड मान हो गया ले डायरेक्टर या मैंने राइटर खोंग संग में रंग स्टोरी चुनो संबंधानो ते का फिल्म चुनो तो फ्रिक्शन फिल्म्स यानो गया ले तेने यहाँ से पो डॉक्यूमेंट्री फिल्म्स यानो गया ले का वो रियल स्टोरी का बेस्ड नो रियल स्टोरी फिल्म चुनो गया ले तेने मांगचत ये डॉक्यूमेंट्री संग टीवी का स्थान को यहाँ ऑनलाइन स्क्रीनिंग चुनो तेज़ुंगा पछानो गया ले. और it is an industry body. We started with the idea कि जो इंडस्ट्री को चाहिए, जो टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री को चाहिए, हम वैसे ही स्किल करके लोग उनको दे सके. आपका नाम? Tsangmala Julenge me Urgyan Tinenale. And I have a question to Mr. Uday. Mr. Uday. Sir, you said the efficiency of the solar panel is depend upon the temperatures, right? So what is that element
which is like if there is high temperature, you have low efficiency with the solar panel. So diode, you have heard about a diode. So diode is having two parts, one is positive and one is negative. That's why it is called as PN junction. So do you still think that this case is still relevant, or skill development should go in a very specific manner or not? Skills are not relevant. It was relevant in past also, it was relevant in future also. फूड प्रोसेसिंग एक ऐसी टेक्निक होती है जिससे आप मैन्युफैक्चर कर सकते हैं या फूड को प्रिजर्व कर सकते हैं लॉन्ग टाइम के लिए। आप छोटा सा एक ग्रुप बनाओ, उसके अंडर आप हमें बताओ कि हमारे पास 50 कैंडिडेट्स हैं जो सर अपैरल इंडस्ट्री में काम सीखना चाहते हैं। हमारा जो टारगेट है वो है 1,43,299 एंड आउट ऑफ विच वी हैव सैंक्शन नंबर इज 89,454 and till 28th February we have trained 18,501 candidates and around 4,892 candidates are under training and the placement is 8,456. कमर्शियल लेवल पर जाने के लायक हो जाते हैं, then you can go to the market, then you invest. Here I would like to mention that our trainees have been absorbed in government and non-government organization, and it really gives us great joy to see them standing for themselves, and most of them have been employed in private sectors where they have opened their own shops. NHPC is doing 2 projects in the Ladakh, and they are also planning for new projects in the Ladakh also, as per the requirement of the power sector. So they are actually major hydro company in the country. So they will be requiring some highly skilled job as well as also the normal skill job. Some years ago, when the entire emphasis on skill development started, this was a very apt saying, I think, which all of you must have heard. But nevertheless, I take this liberty of repeating it, which is that give a man a fish and you feed him for a day, and teach a man to fish and you feed him for a lifetime. So I'll come to the experts. Thank you so much. You have been very cooperative, flying all the way from all over the country. And on the same day, they had to go to Kargil, so they have not been complaining. Rather, they have been very cooperative and happy. And with my inputs also, they have been very adjusting.